अनम्यूट हो गया, स्टार्ट कर बोलना चालू ऐसे ऐसे Hello, welcome to all. Jai Homeopathy, Jai Dr. Hanuman Sahab. Now we start our meeting. Respected sir and my dear friends, regards to all. We as all Rajasthan Qualified Homeopathic Doctors Association quota feel great pleasure to welcome a worldwide pearl of homeopathic system of medicine and all of you participating on this platform today from all over the world. I welcome them by heart to all my friends. We bestow our heads before Honorable Dr. SPS Bakshi sir, who is known for his sweet-heartedness between all who works with him. I feel proud privilege to state here that I don't know how the situation settled so favorable with us in few minutes that Honorable Learned Authority of Homeopathic System of Medicine, respected Dr. SPS Bakshi sir, gave his kind consent to be with us on this platform of All Rajasthan Qualified Homeopathic Doctors Association. We are feeling this quality with depth of our hearts. It will be like lighting of a lamp before sun to introduce Honorable Dr. Bakshi sir before all. Though everyone is well aware of his generousness and devotion to homeopathic system of medicine, but as a matter of protocol, I would try to enlighten few of his achievements. My dear friends, Dr. SPS Bakshi sir, who is the keynote speaker today, is the worthy son of late Dr. K.S. Bakshi Sahab, a renowned homeopathic practitioner of Delhi, being Honorable Professor of Nehru Homeopathic Medical College, New Delhi. He was the Honorable Physician to His Excellency Gyani Jail Singh Ji, the then President of India. Dr. SPS Bakshi sir did his DHMS from Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi in 1973 as a bona fide student of Nehru Homeopathic Medical College, New Delhi. He is a worldwide renowned homeopathic consultant. He had been elected Vice Chairman, Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi from 1986 to 1989. He had been Chairman Examination Committee, Board of Homeopathic System of Medicine, Delhi from 1989 to 1992. And the three firsts are related with him. He is the first elected member of first elected council of first elected president of Central Council of Homeopathy in the year 1991 to 1992. By the virtue of his brilliant, dedicated and devoted work with the homeopaths, the team and homeopathy, he was again elected for the second term of the Central Council of Homeopathy, New Delhi, and there he chaired as president since 1999 to 2009. He is the chairman and managing director of Vaccines, Drugs and Pharmaceuticals Private Limited, a leading manufacturing concern of homeopathic medicines and cosmetics in India. Dr. Bakshi sir is chairman of Vaccines Homeopathic Clinics, world premier and fastest growing chain of 19 ultra-modern clinics spread all over India with an ISO certification, flagship clinics, and having a team of 41 qualified doctors at the clinics with him. Dr. Bakshi sir is the founder chairman of Vaccine Homeopathic Medical College, Greater Noida, which was established in 2002. And this college is affiliated to Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, for conducting BHMS at undergraduate level and MD Homeopathy at postgraduate level.
The mission of the hospital is to promote an integrated system of healing with homeopathy at its helm, backed by therapeutics and lifestyle approaches like yoga, physiotherapy, and naturopathy. With this all, I once again welcome all our esteemed dignitaries of today, all our participants, and the respected Honorable Dr. SPS Bakshi sir, and request him to come before us and spray the fragrance of his valuable knowledge upon us. Once I request all the participants to be with us, listen, understand the philosophy of the allergies our system says, and be with us up to the last. There will be a question answer session too. Please be ready to listen. Honorable Dr. SPS Bakshi sir, please, I welcome sir. Please be with us. Please come on the screen. Please take your podium. Please be welcome Dr. SPS Bakshi sir. Thank you, sir. Hello, can you see me? Yeah. Yeah, okay. Due regards, sir. Thank you very much. Thank you very much. And namaskar to everybody. I see some foreign. Okay, you can hear me now? Yes, sir, but it is disturbing, sir. Okay, okay. You see, I'm going to speak on a new subject, which is a research of 70 years, which was started by my father, late Dr. Kirpal Singh Bakshi, and carried on for 48 years. This research is based on more than 20 lakh patients which I've treated. My main practice is allergies. And when we talk about allergies, the people talk, किस चीज से allergy हो गई है? They think Harish is allergy. वो नहीं आ रहा मेरा. But allergy is not only Harish or itching. It's a very wide subject. And I was surprised that during my research, which was accidental, when we take the family history of the patient, past history of the patient, I found invariably the link, the hereditary link, the genes. मेरी research ये बोलती है that everything is hereditary. Even सच बोलना, झूठ बोलना भी माँ बाप से आता है. Saintly parents produce saintly children. Nalayak politicians, criminals, उनकी औलाद खराब निकलेगी. In the genes of the chromosome, you inherit all the traits. इसी तरीके से सारी की सारी problems जो life की है आपकी health की, they are all hereditary. Most of them. For example, high blood pressure, diabetes, schizophrenia, thyroid problems, behaviors, sharpness, dullness is also hereditary. So, when we talk about hereditary, I found that allergy has a very strong role, hereditary role. And this is the first slide I want to show you. Accept what is acceptable to you, but do not reject what is not acceptable. कई लोगों को मेरा लेक्चर कंट्रोवर्शियल लगेगा. अभी उसको सुनो, उसको समझो और अपनी क्लिनिक में जाके देखना
जो मैं बोल रहा हूं वो कितना ठीक है कितना गलत है। होता क्या है कि हम अपने एक क्लोज बॉक्स के साथ दिमाग से सोचते हैं इसी तरीके से हम चल रहे हैं, नहीं ये ठीक है ये गलत है। बट दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी किसी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले रिजेक्ट नहीं करता, मैं उसको स्टडी करता हूं और फिर मैं अपने कमेंट्स देता हूं। नाउ होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है दैट वी द प्रूविंग हैज टू बी डन ऑन हेल्दी प्रूवर्स। फर्स्ट ईयर से हमें सिखाया जाता है हेल्दी प्रूवर्स, हेल्दी प्रूवर्स। Now my question is it a reality or a myth? A lot of emphasis have been given on healthy provers in our teaching. Are healthy prover exist, or it is just a pseudo state? According to Dr. Dinsha Mehta, who was personal physician to Mahatma Gandhi, who taught me this naturopathy के chapters जो मैं दे रहा हूँ उसके अंदर, that we have got the 5 levels of health: ill health, average health, normal health, supernormal health, supranormal health. ये different healths आती हैं। यार उसमें सबसे health का important है average health. Most people when not seemingly ill are no better than in a state of average health. They have some chronic disease lurking in the body in the form of skin, respiratory, musculoskeletal disorders. When their dormant condition becomes dominant, the state of ill health sets in. What is normal health? When there's a balance between the body, mind, and soul. This is the definition of WHO, normal health. The next state is supernormal health. It is a state of exceptionally athlete who have got very good genes. जितने world class boxers हैं, wrestlers हैं, इनके genes बहुत अच्छे होते हैं. They're very strong. I asked this question to Mr. Dara Singh, who was a very famous wrestler. I happened to treat him till he died. So I asked him this question, Dara Singh ji, I knew the answer. आपकी अच्छी सेहत का कारण क्या है? He used to say, मैं 10-12 रोटियां खाया था, 2-2 किलो दूध पी जाता था और 100 ग्राम 200 ग्राम घी कोई चीज नहीं थी मेरे लिए. ऐसे इतना अच्छा डाइजेशन कहां से आया? His wife immediately said, इनके father who lived for 101 years. So he had a very good genes and good health because of that. सारे आदमी दारा सिंह नहीं बन सकते. मेरा बच्चा, आपका बच्चा दारा सिंह नहीं बन सकता जब तक उसके अच्छे जीन्स नहीं हुए. The last state is called supranormal, जो high beings की हैं. Guru Nanak, Kabir, Ramakrishna, Jesus Christ. You know the history of Guru Nanak. His body ascended with the soul. Whole body got spiritualized. That is very rare. You see, this is a very big lecture. I give it to my attorneys in the college. This lecture is for minimum 10 to 12 hours. मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश करी है. Now, how you can take your health to a different level? In order to take or to attain perfect balanced state of health, combination of homeopathy, yoga, and diet is very important. Why homeopathy? Homeopathy पहले दिन से बच्चों को देते जाओगे, उसकी immunity strong होगी. I recommend yoga to every patient. I have a full-time teacher in my clinic. And diet. Diet is very important. With homeopathic medicines, which are mild, harmless, safe, and without side effects, we shift the patient's state in a better state of health. Patient approaches homeopathy at this level of health, at ill health. Homeopathic medicine boosts your immune system and hence makes our body strong, so that we no longer affect by the exogenous factors जो बाहर से आते हैं.
But there are factors which act as obstacles in the attainment of higher state of health. These are known as maintaining causes: diet, errors, pollution, stress, etc. मैं आपको briefly बताता हूं. The transformation of the patient from ill health to normal health can be achieved with the combination of these three, as I told you: from ill health to normal, genetic, environment, and fulfillment of the basic laws of health. Now, what are the 5 fundamental laws of health? ये naturopathy में बहुत importance देते हैं इस चीज को. First is the law of elimination. The toxin from the body must be eliminated from the body, and that is only possible through exercise. When you sweat, you throw the toxin away, and when you exercise, if you have a balanced diet, law of nutrition comes in, law of circulation, and after exercise, you get a good sleep, and the stress is also out, called law of emotions. So these 5 laws are very important. Now, coming to the main question, what is allergy? Patient आके बोलते हैं मुझे allergy हो गई, ये खारिश हो गई है. This is a very small thing. The hypersensitive state of a person is called allergy. It varies from person to person. एक आदमी दूध पीता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, दूसरा आदमी दूध पीता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, जो हनी मैंने इडियोसिंक्रेसी भी बताई है. But they are always questioning इस चीज से है, इस चीज से है. चीज is not important. एलोपैथी के अंदर ये सारा दिया गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है पेट की, celiac allergy, milk intolerance, fish allergy, peanut allergy. Now, these are not relevant in homeopathy. Skin allergies में निकल का है, cosmetics का है, respiratory का, pollens का है, tobacco का, occupational health. These are all exciting causes. These are not the main causes. The main cause, every allergy is mistaken to be exogenic. A battery of tests like patch test, ये test कर दो, वो test कर दो, which is not correct, which is quite impossible, impractical. आप test कराओ, 200 tests बोल देंगे ये इससे sensitive है. You can't leave everything. Homeopathy says you must build up your immunity so that you can take everything and digest. इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कोई चीज बंद मत करो, थोड़ी थोड़ी खाते रहो. मैंने जितने भी केसेस सीलिक एलर्जी के पकड़े सारे ऑलमोस्ट ठीक करे हैं, और 1-2 हजार नहीं है, they go in thousands. With homeopathy you build up beautiful resistance. With naturopathy, yoga, and the right diet, and once the immunity is built up, they take everything. According to me, the fundamental cause of allergies which runs in the families of the patient, that is, it is hereditary. For me, this is very important. Hereditary. सब कुछ माँ बाप से आता है. Now these environments, what we are talking today, dust pollution, cosmetic, certain foods, pollens, industrial waste, preservative, man-made fiber, drugs, vaccine, insecticide, pesticide. These are external factors, but these are not the main factor. The main factor is the weak immune system you get it from the parents and grandparents. For example, vaccination. See, बच्चों को कितना आप इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसका एक सेंसिटिव बॉडी के अंदर आप इतने इंजेक्शंस देंगे उसकी इम्यूनिटी और खराब होगी. The whole body becomes battlefield for the injection to interact. I always tell them, if you can avoid for God's sake, both injections mat lo. You read, अब Google खोलो, उसमें लिखो the side effects of vaccination. आपको इतने मिलेंगे, कोई blind हो गया, कुछ को ये problem हो गई, कोई deaf हो गया. Even it has affected the brain also. And definitely there's no doubt about it. The strong medicine like penicillin, aspirin, sulfa, all allopathic medicine, they have tremendous side effects. जो एक low grade fever आ जाता है, patient आते हैं जी मेरा जो बुखार उतर ही नहीं रहा है. मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ जी, low grade fever आ रहा है 99 के करीब आ रहा है शाम को,
100 भी टच कर जाता है। आपको कोई बीमारी थी, they always say हाँ ये हुआ था इसलिए दवाई खाई थी। It is a side effect of that medicine. So you have to remove the side effect and fever becomes normal. Now when I show you the world of pesticide and insecticide, see, 60 samples were collected within 1 week from delivery from lactating women at age and were analyzed by सबके अंदर whole wheat, whole milk fat के अंदर chemicals मिले। रेंज देखो इसकी। See, now the second slide I'm showing you. The level of DDT and BHS residue in the human, सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। DDT के level देखो। This is a search was done in Delhi. This is the old slide, or latest slide देखो, Google खोलो. The level is very high. And shockingly, UK is 3.0, India is 31.0. It is bad. And now see this slide also. These chemicals are exciting causes, not the main cause. Again, I repeat, I will keep on repeating, the main cause is the weak immune system. You get it from the parents and grandparents. And when I talk about grandparents, it is not only Dada, Dadi, Nan ke bhi hamare hain. The paternal side is not only important. Maternal is also equally important. Now, these things which cause patients sneeze are the cause for arthritis, indigestion, and dermatitis. Allergy is primarily endogenic. Primarily endogenic is primarily exogenic. उल्टा बोल गया हूं. And is to be blamed on parents. Allergy is primarily endogenic. Apparently exogenic लगती है, नहीं. It is hereditary. Now, endogenic, all hereditary symptoms come out of the body when the body resistance is low. जितनी भी ये problems हैं, all hereditary symptoms come out of the body when the body resistance is low. As a child, you get growing pains. जिस बच्चे के टांगों में दर्द होता है, 5 साल का बच्चा है, माँ दबाती है, बच्चा सो जाता है. नोट कर लो, इस बच्चे को बड़े होके शादी के बाद लड़की है, पहले सिजेरियन में उसको दर्दें आ जाएंगी. This shows predisposition for arthritis. मैंने कितने बच्चों को देखा है, टांगों में दर्द होना, और उनको I'm lucky I'm treating the 4th generation in my clinic. Same. जैसे ही when you give shock to the body, cesarean, hysterectomy, surgical interference, and old age, ये सारे symptoms बाहर आ जाते हैं arthritis के. And you get problems from both sides, mother side, father side also. चारों में ये respiratory, digestive, skin, and musculoskeletal, ये चार एरिया autoimmune disorders. चारों hereditary, I can show you. All hereditary is not autoimmune. For example, diabetes, high blood pressure, schizophrenia, thyroid problems. They are not autoimmune. They are hereditary. Now, briefly, I will show you that all these areas like adenitis, wheezing, cough and cold, जहां खांसी जुकाम मिलेगी, वहां स्किन मिलेगी आपको. याद रखना इस बात को. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में आपको खारिश हो रही है, आपको जुकाम नहीं लगेगा. अगर आपको नहीं लगेगा तो आपके ब्रदर सिस्टर्स को मिलेगा. अगर फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ अस्थमा या एक्जिमा या सोराइसिस है और एक आया है तो दूसरा मिलेगा. तो चैनल सर ये जो है, ये स्किन है, ये रेस्पिरेटरी है, दे आइडेंटिकल. आई विल कम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि जिसको आप सप्रेशन बोलते हैं, मैं उसको सप्रेशन नहीं बोलता हूं. एंड दीज एलर्जीज दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम स्किन टू रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी टू स्किन. दोनों में खत्म हो गया, पेट में पकड़ लेती है. आईबीएस के सिम्टम शुरू हो जाते हैं, हार्ट बर्न्स. पर आपको एक चीज देखना है, ये चारों एक ही हैं, चारों एक है, घूमते रहते हैं सीजन के साथ. और
कई डिजीज इन हेल्थ है वो ठीक ही नहीं होते, वो एक होम्योपैथ को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरे को पकड़ लेते हैं, फिर होम्योपैथी छोड़ देते हैं आयुर्वेदिक, दे आर सफरिंग। नाउ कमिंग टू द मेन सब्जेक्ट, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी डिसऑर्डर। अब मैंने एलर्जी को तो बता दिया कि इट इज एंडोजेनिक, इट इज फ्रॉम पेरेंट्स। Exogenic or external factors are only exciting cause. But what are the symptoms of allergy? उसका main symptom है inflammation, सूजन. When you talk about inflammation, it is called itis, allergic rhinitis, arthritis, colitis. And second is itching and dryness. Itching anywhere in the body, dandruff, eczema. इवन प्रोराइटिस वल्वी जो फीमेल्स में खारिश होती है, दिस इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर एंड आई हैव क्योर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑन दिस बेसिस। इचिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ एलर्जी एंड इट कॉजेज ड्राइनेस एंड इन्फ्लेमेशन कॉजेज पेन, आर्थराइटिस, कोलाइटिस. What is the mechanism of allergy? The mechanism of allergy is this slide. When the escaping histamine grains, as a result to an allergic response, this cell break. This escaping histamine, they travel in the body. Body में जाके ये चिपक जाते हैं. अगर आपके माँ बाप में आर्थराइटिस की टेंडेंसी है तो ये जॉइंट्स में चिपकेंगे, मसल्स में चिपकेंगे, माइल्जिया पैदा करेंगे, इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे. अगर रेस्पिरेटरी आपके घर में है माँ बाप के अंदर तो ये वहां जाके खांसी जुकाम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा करेंगे. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा. और अगर आपके पेट की सेंसिटिविटी है तो पेट को पकड़ेंगे, पेट में जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे, कोलाइटिस पैदा करेंगे. Now, you have to make this strong. इसलिए एलोपैथी में कहते हैं कि वो विटामिन सी जो है इसकी लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है यदि को, और जैसे जी आंवला लो इसको स्ट्रॉन्ग करता है. मैं सच्ची बोल रहा हूं, होम्योपैथी की दवाई अगर सही लग रही है, आप नोट करना, ये लाइनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी और उसके जो फ्रीक्वेंट अटैक्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे. Now the question is, any cure for allergy? When I say any cure for allergy, that means permanent cure. एक तो है keeping the patient away from suspected allergens, but for how long? The other is to improve the immunity of the body. Now this is a very important slide. आप कभी नहीं कह सकते कि ये एलर्जिक अटैक हुआ एकदम ही खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होएगा. इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी विल बी रिड्यूस्ड. ये देखिए, एक पीक बेटर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर कम हुआ. और जो सोराइसिस है, ऐसा कभी नहीं हो कि एक डोज दी तो ठीक हो गया. नो, ऑल स्किन प्रॉब्लम्स आर वर्स इन समर्स और बेटर इन विंटर्स. सोराइसिस का उल्टा है, सोराइसिस इज वर्स इन विंटर्स. तो मैं कहता हूं बड़े बड़े गंदे केस, इतने गंदे गंदे केस हैं कि सारी बॉडी में छिलके निकल रहे हैं. एंड आई टेल देम, फॉर गॉड सेक, मेरे पास आए हो तो आप 3 से 5 साल पेशेंस रखना है. 2-3 साल में आप आज दवाई शुरू करिए, आपके छिलके कम होने शुरू हो जाएंगे, आपके स्केल्स पतले होने शुरू हो जाएंगे, जो लाल स्किन है वो काली शुरू हो जाएगी, इचिंग कम हो जाएगी. पर नेक्स्ट विंटर्स में पता लगेगा कि आपको कितनी इंप्रूवमेंट हुई है. You all know it improves the constitution of the patient, homeopathy. And homeopathy with yoga and naturopathy with the right diet, it plays a beautiful role. I'm a great fan of yoga, naturopathy with homeopathy. तो मुकाबला नहीं है.
Now, ये बड़ी स्लाइड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. Allergic rhinitis, sinusitis, tonsillitis, and adenitis. Due to repeated attacks of cough and cold, these two chokidars situated at the base of the throat, they get enlarged. They become unhealthy. And the surgeons say, they say, isko remove kara do. This is wrong. Kabhi nahi karana. It is an erroneous or wrong idea that their surgical removal decreases the individual susceptibility to catch infection. मेरा experience है कि उल्टा केस खराब हो जाता है और एलर्जिस्ट एकदम चौकीदार है ही नहीं, इन्फेक्शन सीधा अंदर जाएगी. So condition like laryngitis, tonsillitis, bronchitis are much more than microbial infection. They are the sign of body weak immune system being clinically manifested as recurring attacks of cough and cold, nasal polyps, wheezing and asthma. कभी भी पहले दिन अस्थमा नहीं होएगा. You have tendency to catch cough and cold. आपने दवाई दी, ठीक हो गया, फिर दोबारा आएगा पेशेंट, फिर दवाई दी, ठीक हो गया. बट अगर एलोपैथी दवाई दोगे तो डेफिनेटली उसको सप्रेशन होती जाएगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगी. इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं. लेट अस कंसीडर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली who may be suffering from recurring attacks of cough and cold, and let one be treated with homeopathy and another with allopathy. What will happen? The child treated with homeopathy has a mass reduction in the frequency, intensity, and duration of the attacks, while the child under the allopathic treatment will end up with bronchitis. 100% allopathy दवाई देते जाओ, उसको सांस रुक जाएगा, वो कहेगा जी inhalers दे दो जी, nebulization दे दो. This is because the disease has not been tackled. It has been suppressed with allopathic medicines and not with homeopathy. Homeopathy में ऐसा होता ही नहीं है. पर मैं ये जरूर बोलता हूँ पेशेंट्स को, for two change of weather, दिवाली होली in India, change of weather होती है, दिवाली के टाइम में होती है, होली के टाइम पे. March, April, this is season for asthma, and October, November. Watch, पिछले साल वाला हाल नहीं होगा, इस साल बहुत अच्छा रहेगा. Plus the diet precautions. Now, this is for the students. Doctors को तो पता ही है कि ये जो एक्स्ट्रा म्यूकस आती है, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग ऑफ. ये ब्रोंकस को लाल लाल जो हो रहा है, ये जो आपके हैं एयर पैसेजेस वो ब्लॉक हो जाते हैं. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स? इनहेल करते हो या लेते हो, वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली हटाते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है. आई यूज द वर्ड टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है. एंड यू बाय टाइम. बट वन थिंग आई मस्ट से, कोई भी पेशेंट एलोपैथी से चल के आएगा आपके पास अस्थमा का, डोंट स्टॉप एलोपैथी मेडिसिन ऑल ऑफ अ सडन. आई टेल देम, आप धीरे धीरे बंद करना. एकदम बंद करोगे, अटैक इतना जोर से होगा, आपकी दवाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको नेबुलाइजर की जरूरत होगी, वो छोड़ के चला जाएगा. दूसरी बात, आर्थराइटिस. आज सुबह भी मैंने पेशेंट देखे, एक पेशेंट को 5 साल से मेथोट्रेक्स वीकली दे रहे हैं वो. Now I can't stop it suddenly, and she's a girl of only 36 years. अगर खाती रहेगी तो उसकी डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी. ऐसे यू टेक माय मेडिसिन, आधा घंटा होम्योपैथी का गैप डाल के लेना, और धीरे धीरे मैं इसका वीकली 7 दिन के बाद 8 दिन करूंगा मेथोट्रेक्स. मेथोट्रेक्स को फिर मैं एक दिन बढ़ाता जाऊंगा. लुकिंग एट द इंप्रूवमेंट, आई डू दैट. डोंट स्टॉप एलोपैथी मेडिसिन ऑल ऑफ अ सडन. The second area is musculoskeletal. Now, arthritis is divided into two. Articular, जिसको joints बोलते हैं, non-articular. Articular होता है where the pain is here, called frozen shoulder, tennis elbow, golf elbow, slip disc, L4, L5, S1. This is arthritis of the spine. घुटनों में हो जाएगा, बोल देंगे जी osteoarthritis है. Muscles में हो जाएगा, बोलेंगे fibrositis है, tendinitis है, fasciitis है, और myalgia है. Muscles are inflamed. और आर्थराइटिस पेशेंट मसाजें कराता रहता है, दबाता रहता है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके फैमिली हिस्ट्री में आर्थराइटिस है, बी केयरफुल. आपको भी तंग कर सकता है प्रॉब्लम. अगर माँ बाप को दोनों को है तो आप तो फंस गए. अगर एक को है तो आपके चांसेस 50% है. माँ को भी डायबिटीज है, बाप को डायबिटीज है, तो आएगा ही आएगा. इसीलिए मैं सारे बच्चों को पहले दिन से कहता हूं, इनको एक्सरसाइज में डालो. एंड फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ डालना है, इनको योगा में डालना है. माइल्ड
वेट ट्रेनिंग भी कर डालना है। देन आई गिव एग्जांपल, कभी जोड़ों का दर्द लेबर क्लास में होता है? आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और योगा वालों को नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इस चीज को, मेरे मदर फादर को दोनों को जोड़ों का दर्द था, मेरे अंदर भी आया है। मैं रोज 1.5 घंटा सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, ट्रेडमिल भी करता हूँ, लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, और पूरा आसन करता हूँ, स्ट्रेचिंग्स के फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। द डे आई स्टॉप, आई नो बुढ़ापा सबका खराब है, मेरा बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरी टेंडेंसी है माँ बाप के अंदर, दोनों को, मेरी मासियों को, मेरे मामों को, मेरे अंकल्स को, सबको दर्दों की तकलीफ है। मेन सिम्टम्स आपको पता ही है, इंफ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस। अब स्टिफनेस कैसे हटेगी? थ्रू स्ट्रेचिंग। और काम मसल में पेन है, उसका एक ही आसन है, पश्चिमोत्तानासन। वो नहीं करेंगे वो खत्म नहीं होगा, जितना मर्जी आप दवाई देते रहो, मैकफॉस हो या क्यूपरमास हो क्रैम्प्स के लिए, नहीं। क्रैम्प्स अगेन इज अगेन इंडिकेशन ऑफ आर्थराइटिस। और डिस्मेनोरिया, इट इज रूमेटिक यूट्रस। मैं आपको रूबिक सिखाऊंगा कैंट के अभी। देन लेथार्जी फीलिंग रहेगी आर्थराइटिस पेशेंट को, उसको लगेगा मेरे को बहुत हाई, थक गया मैं, आधा घंटा सोएगा फ्रेश फील करेगा। हेडेक्स, माइग्रेन इज नथिंग बट उसके जो सूचना मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं अभी आपको। बैकएक, L4, L5, S1, you get inflammation. Now these sutures, they get inflamed and you get a migraine. And मैं देखता था मैं आर्थराइटिस की दवाई दे रहा हूं, माइग्रेन भी ठीक हो रहा है, स्लिप डिस्क भी ठीक हो रहा है। Then I asked one day Dr. Bhinder Singh, अभी late Dr. Bhinder Singh of Calcutta, who was chairman of education committee in CCH, मैं कहा भाई साहब ये क्या प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रही कि जब दवाई इसमें आर्थराइटिस के दे रहा हूं और माइग्रेन भी ठीक हो रहा है। Then one day he called me, he says मैं आपका शिक्षा मंत्री बोल रहा हूं प्रधान जी, ये नोट करो रूबिक्स। Now see this रूबिक्स, आपको सारे रूबिक्स मिलेंगे। पेन हेड रूमेटिक, इलाज कर दो उसको। कैंट एंड बोरिक में दिया हुआ है, 200 साल दिया, and has been replaced in modern terminology by different names. देखो बोरिक में 702 पेन हेड रूमेटिक गाउटी, इसको माइग्रेन बोलते हैं। पेज 146 हेड पेन रूमेटिक माइग्रेन। फीमेल menses copious in rheumatic constitution, dysmenorrhea. चेस्ट पेन रूमेटिक, हर जगह रूमेटिक। और फेस में यहां मेस्टॉइड एरिया में होएगा, वो भी रूमेटिक है। उसको कैसे जोड़ना है? टेक द फैमिली हिस्ट्री, यू फाइंड आर्थराइटिस मिलेगा और पेट की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आना ही आना है उसको। Look at this page. Those who are interested, we will send them the link. ये पूरी आप लेक्चर्स अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। थ्रोट पेन रूमेटिक, कभी सुना है थ्रोट पेन रूमेटिक? कैंट ने लिखा है 200 साल पहले। थ्रोट पेन साइड रूमेटिक, बैकएक इस उन दिनों में MRI नहीं थी, अब तो निकल आई है। See, everywhere you find myalgia, osteoarthritis, नाम बताए हैं सेम। स्वेलिंग नी, जिसके पैरों में स्वेलिंग रहती है और किडनी बता रही कि कोई उसके एल्ब्यूमिन पे इन्फेक्शन नहीं है, टेक इट इन राइटिंग, उसके अंदर प्री डिस्पोजिशन फॉर आर्थराइटिस है। स्वेलिंग ऑफ एंकल्स इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि माँ बाप के अंदर आर्थराइटिस है, इसके अंदर आएगा। And all hereditary symptoms that come out of the body when the body resistance is low, as I told you earlier. As a child, you get growing pains. After delivery, cesarean, you get pains. Then surgical interference and old age. Old age में देख लीजिए आप, मंदिर गुरुद्वारों में कुर्सियां दी हुई पीछे बैठने को, झुक के बैठ भी नहीं सकते हैं, सब टांगे टेढ़ी हो गई उनकी। अगर ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, डेफिनेटली दे विल नॉट सफर दैट मच। आगे नहीं हो रही, आगे नहीं हो रही स्लाइड। Now next is digestive system.
See, I've shown you sequence. पहले मुंह में छाले आएंगे, छाले मुंह में आना is again inflammation. छाती में जलन, हार्ट बर्न. It's a very very difficult area to cure. आप क्योर कर देते हो दोबारा हो जाता है. हार्ट बर्न, very difficult. Burning sensation in the epigastrium gastric. ये पहले दिन से पेप्टिक अल्सर नहीं बनता है. पहले मुंह में छाले होंगे, खट्टे डकार आएंगे, एसिडिटी होगी, फ्लैचुलेंस. अच्छा, फ्लैचुलेंस में जो है गैस होती है, ये भी जेनेटिक है. अब देखना. और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. और जितने गंदे केस हैं उनके लिए कुंजल करना बहुत जरूरी है. एवरी डे मॉर्निंग टू स्टार्ट विद, एवरी डे, देन रिड्यूस इट स्लोली once or twice. Kunjal is very important. And then when you are not able to cure through allopathic medicine, आप एलोपैथी दे रहे हैं तो उसका erosions mucous membrane से शुरू हो जाती है, and peptic ulcer, and then comes Crohn's disease. और टच वुड मैंने जितने केस ट्रीट करा अल्सरेटिव कोलाइटिस के, Crohn's के, पेप्टिक अल्सर के, I am successful 90-95%. Only area I am finding is very difficult is heartburn. वो ठीक नहीं होता है जल्दी, बहुत दुखी करता है. वो आप नोट करना चीज को अपनी प्रैक्टिस में भी. Today we can say every person on the street is a walking pathological laboratory, suffering from allergies in one form or the other, that is skin, respiratory, digestive, and musculoskeletal. Now I'll show you some cases of the link, family link. See, they have ulcerative colitis, backache, sinusitis, or moist rashes on the tip of index finger, hereditary. और ये देखिए पास्ट हिस्ट्री को देखिए, रिकरिंग कफ एंड कोल्ड. प्लीज इस तरीके से एलर्जी पेशेंट का आप केस हिस्ट्री लीजिए, आपको मिलेगा लिंक. माँ को अस्थमा, आर्थराइटिस, फादर को स्किन, तो बच्चों को स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक जॉइंट्स आएंगे. अब आज बेटी उसकी बैकएक, स्वेयर स्टमक, सेंसिटिव स्किन. ये देखिए बॉडी एक्स, पेट सेंसिटिव है, इजी टैनिंग. धूप में अगर आधा घंटा गए और स्किन टैन हो रही है, सोच लो बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जीज उसके घर में. इजी टैनिंग, आधा घंटा धूप में खड़ा जो टैन हो जाए, उसका आईजी लेवल बहुत ऊपर होगा अगर टेस्ट कराओगे तो. और सरप्राइजिंगली आईजी लेवल नॉर्मल नहीं होता कभी भी, नॉर्मल होकर फिर बढ़ जाता है. दैट मींस एलर्जी रिमेन्स डोमिनेंट इन द बॉडी. इसका साइनसाइटिस मिला आपको, फैमिली से जॉइंट पेन्स मिली, साइनसाइटिस, कोलाइटिस, सेंसिटिव स्किन. नाउ सी व्हाट, हाउ इट शिफ्टेड. Took Ayurvedic medicine 1.5 years back for sinusitis. Sinusitis got cured after taking Ayurvedic medicine. It is not only homeopathy which will suppress or shift. Shifting and suppression में एक ही चीज समझता हूं मैं इसको. That is the allergy of the respiratory has been shifted to GIT. एक चीज ठीक होगी दूसरी में पकड़ी गई. मेरे पास कितने पेशेंट हैं, स्किन की दवाई दे रहा हूं, उसको मैं देते देते ठीक है जुकाम शुरू हो गया, but skin better हो गई है. The moment I get the symptom, मैं placebo देता हूं immediately. And primary action is the action of the medicine. Secondary action कि हम वेट नहीं करते, मारते जा रहे, दवाई मारते जा रहे हैं. जैसे ही मैं placebo देता हूं, patient improves. Most of our cases are relieved by not returning in time. दवाई 15 दिन की दी है, वो महीने के बाद आए, बोला जी मैं दवाई खाई थी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आजकल आई एम फीलिंग मच बेटर. आपने उसको 4 वीक्स का टाइम दे दिया सेकेंडरी एक्शन को, which is also called curative action. This shows allergy is hereditary considering the 3 generations. I can show you 4 generations allergies. मैं सब केस हिस्ट्रीज पढ़ी मेरे पास. Allergy shift from one system to the other. 5 साल के बच्चे का इल हेल्थ देखो, पेट सेंसिटिव है, 2-3 टाइम लूज मोशंस, डैंड्रफ, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, पेन नी, खांसी जुकाम, चारों मिलेंगे. प्लीज अपने क्लिनिक्स में जाके ये चीजें नोट करना कि चारों ये चीजें साथ मिलेंगी. और मटेरियल मेडिका में आप 5 स्किन की दवाई निकाल लो,
5 रेस्पिरेटरी के निकाल लो, 5 पेट के निकाल लो, आपको सब भी मिलेंगे सिम्टम। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप मोडालिटी ढूंढते हो, फिर आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स करते हो। दिस इज व्हाट आई फाउंड व्हेन आई ओपन हेयरिंग। स्किन के अंदर लिखा था, स्किन भी आ गया, रेस्पिरेटरी भी आ गया, स्टमक भी आ गया, जॉइंट्स भी आ गए। जो रेस्पिरेटरी की दवाई निकाली, आर्सेनिक निकाली या जो दूसरी दवाई निकाली, उसमें भी आ गए चारों सिस्टम। तो बेसिकली जब प्रूविंग हुई है, उसमें सारे के सारे सिम्टम जो बाहर आए हैं, पहले हेरिडिटी सिम्टम बाहर आए हैं। जो पहले हेरिडिटी सिम्टम जो बाहर आए हैं, वो आपने नोट करना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से प्रूविंग के अंदर आपको उसको स्टार डालना पड़ेगा, साइड में लिखना पड़ेगा, दीज आर हेरिडिटी सिम्टम, दीज आर सेकेंडरी सिम्टम। जो नए सिम्टम आए वो है प्रूविंग होम्योपैथी की। ये एसोसिएटेड सिम्टम माने जाएंगे, नॉट द मेन सिम्टम। इसलिए सारी दवाइयां जो बड़ी कंफ्यूजिंग है, आप 50 निकाल लो दवाइयां, उसमें मिलेंगे सब में ये। देखिए फैमिली हिस्ट्री में मिल गया, जॉइंट पेन्स, कॉन्स्टिपेशन, इल हेल्थ की। इल हेल्थ को आप किस बहुत मेहनत करते हो तो उसको एवरेज हेल्थ में ले आते हो, लेकिन उसको नॉर्मल हेल्थ में लाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। कंक्लूजन, allergy affects all the symptoms simultaneously at a very early age due to weak immune system inherited by parents. Now this is very interesting for you. Single medicine, healthy provers, suppression, permanent cure, homeopathy aggravation. हमारे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि सिंगल मेडिसिन देनी चाहिए। Now what is single medicine? What is healthy provers? What is suppression and shifting? और होम्योपैथी सबसे पहले हम बोलते हैं हम बीमारी जड़ से हटा देंगे, देन होम्योपैथी एग्रीवेशन। मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Hahnemann himself was using combination medicine like Iprasal, caustic, etc. I was shocked when I was asking because we are in pharmaceuticals, तो जब बना रहे थे मैंने बोला जी कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन मेडिसिन आप देखिए हैं। I was shocked to see कि Hahnemann has made 3 medicines from combination। मैं दिखाता हूं अभी आपको आगे, जो फार्माकोपिया में है। According to साराभाई कपाडिया of Bombay, the legend, डेथ हो गई 30 साल पहले, my father's colleague, used to say a combination of 2 medicine, of 3 medicine, of 4 medicine no longer remains a combination. It becomes a new medicine, provided it is proved and reproved by the prover that it works. See this. I'll come to this combination in the coming slides. It is difficult to find 100% healthy provers, as most of us have, or the others disease have some or the other disease lurking in the body in the form of skin, respiratory, stomach and joints. अब देखना, आप जितने बैठे हैं इसमें लेक्चर सुन रहे हैं, आप देखिए आपके घर में जुकाम लगने की टेंडेंसी, गला खराब होने की टेंडेंसी स्किन की, क्या वो मिलेगा वहां? स्किन की, पेट की, जोड़ों दर्द की, कोई ना कोई एक आदमी को ये तकलीफ होगी या चारों को होगी। चारों सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप मुझे एक आदमी ध्यान से बताए, आउट ऑफ सो मेनी पीपल सिट ऑब्जर्विंग दिस फिनोमेना, आपको 100% हेल्दी प्रूवर मिला कहीं? नहीं मिलेगा। वी आर अपेरेंटली हेल्दी, देयर इज 1 chronic disease or 2 chronic disease lurking in the body, जैसे कि मैं बता रहा हूं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। मैं 50 साल की उम्र तक मैं अपना बीपी चेक करता रहता था, बीपी क्यों नहीं आया, बीपी क्यों नहीं आया, बिकॉज मेरी फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रांग है। आ गया तो घर में हंसते थे, तो बीपी क्यों चेक कर रहा है, मैं कहा आएगा ये। एंड सरप्राइजिंगली माय ब्रदर गॉट एट द एज ऑफ 76, माय सिस्टर गॉट एट द एज ऑफ 79। वो दांत की सर्जरी कराने गए, रूट कनाल, सडनली शॉट अप टू 200। शी सेड मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया। मैंने कहा बहन जी आपको होना है, वो डोमिनेटर है। माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग डे एंड नाइट इन द कार, एंड सर में दर्द है, सर में दर्द है, साइनस हो गया,
कभी जल नीति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने बीपी चेक कराया, देखा सेकंड डे बीपी वाज हाई। एट व्हाट एज? 76 and 79. Now, when we take a suppression, it's not only suppression, it is suppression and shifting. We have been able to relate clinically the relationship between skin, respiratory, stomach, and joint. So many times, due to repeated repetition, we shift the disease to a more sensitive plane. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेशेंट को अस्थमा है, आपने दवाई दी, वो कहता है मेरा सांस इज मच बेटर, पर डॉक्टर साहब मेरा ये खारिश शुरू हो गई है। मेरे कहने पर ट्राई कर लेना, खारिश की दवाई मत देना, उसको प्लेसिबो देना, सब नीचे आ जाएगा, बिकॉज सेकंड रिएक्शन की हमने वेट ही नहीं करी है। ऐसी दोनों सप्रेशन शिफ्टिंग इज अ हेयरलाइन डिफरेंस। ये दोनों ठीक हो गया, पेट पकड़ा जाता है। जहां पेट आएगा वहां दर्दें आएंगी आएंगी। आयुर्वेदिक की थ्योरी है, वायु पित्त एंड कफा। एग्रीवेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, एग्रीवेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड एज होम्योपैथी एग्रीवेशन। जितनी भी दवाइयां ले रहे हैं, पहले पेशेंट को बोल देते हैं देखो हमारी बीमारी से आप दवाई से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। ये मत बोलो प्लीज, ऐसा मत सोचो, ये होम्योपैथी एग्रीवेशन है और कंफ्यूज एज सप्रेशन ड्यू टू इनकरेक्ट सिम्पटम। मैं आपको सिंपल 3 चीजें 4 चीजें समझाता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, कि जैसे आपने दवाई दी है पेशेंट को, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एग्रीवेशन, मेडिसिन एग्रीवेशन, डिजीज एग्रीवेशन। जिसको तो है मेडिसिन एग्रीवेशन, उसकी बीमारी बढ़ेगी, और होम्योपैथी एग्रीवेशन में भी बढ़ेगी। दोनों में यू हैव टू स्टॉप द मेडिसिन, डोंट रिपीट। जैसे ही आप बंद करोगे, जिसको है मेडिसिन एग्रीवेशन, उसकी बीमारी वहीं आके रुक जाएगी जहां पहले थी, उसके बाद क्योर की तरफ नहीं जाएगी। बट होम्योपैथी एग्रीवेशन जिसकी हुई है, आपने दवाई बंद करी है, प्लेसिबो दी है, उसका इट विल गो टुवर्ड्स क्योर। फॉर एग्जांपल किसी का एक्जिमा डिस्चार्ज निकला बाजू में, आपने दवाई दी और बढ़ गया, नेचुरली आप फिर स्टॉप करोगे, प्लेसिबो दोगे। जब दोगे आप देखोगे कि वो सूखना शुरू हो गया, छिलके गिरने शुरू हो गए। वेट, डोंट रिपीट, डोंट रिपीट। कई बार हम बहुत एंशियस होकर जल्दी रिपीट कर देते हैं, because of frequent repetition we spoil the case. जब तक वो नए सिम्टम नहीं बोलता ये मेरे बढ़ रहे हैं, डोंट रिपीट। बेशक 1 डोज देनी पड़े, और जैसे उसके सिम्टम दोबारा आते हैं ठीक होने के बाद, जब पार्शियल रिलीफ आया, फिर 1 डोज दे दो, जो भी दवाई आपने चूज करी है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट repetition shifts the disease to a more sensitive plane. But when we talk about permanent cure, it is very, very difficult or impossible that you can bring permanent cure in allergies. I use the word impossible. Please go and observe. जिन पेशेंट को हमने ठीक किया, 5 साल के बाद आएंगे, 10 साल आएंगे, ये जुकाम ठीक हो गया था जब स्किन शुरू हुई है, ये ठीक हो गया, डॉक्टर पेट खराब आया, और फिर दोबारा आ जाएंगे उसी चीज के लिए। इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। मैं कभी भी पेशेंट को नहीं बोलता जी मैं आपकी बीमारी जड़ से हटा दूंगा। मैं कहता हूँ जी आई विल इंप्रूव योर कंडीशन, आपको अस्थमा में इनहेलर्स बंद करा दूंगा, आपकी ये डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन भी छुड़वा दी मैंने कई पेशेंट्स की जिनको सार्कोइडोसिस हुआ है। लेकिन अगर आप सोचो बीमारी दोबारा नहीं आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। अस्थमा नहीं आएगा, स्किन आ जाएगी, ये दोनों नहीं आएंगे तो पेट आ जाएगा। और अगर आप बोलते हो कि मैं परमानेंट क्योर करा है, तो आप पेशेंट को 10-15 साल ऑब्जर्व करो। हाँ, कई पेशेंट आए मेरे पास, डॉक्टर साहब मैं 20 साल तक मेरे को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसी पेशेंट ने मेरे को द्वारका 21 साल के बाद बोला सर दोबारा से आ गया मेरे को, ये तो 20 साल पहले आपने ठीक कर दिया था। आने का कारण क्या है? एक्साइटिंग कॉजेस, खाने पीने में। अब जिसका गला सेंसिटिव है उसको दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा दो। अस्थमा वाले को कड़ी दो ना, तरबूज खरबूजे दो उसको, और देखो क्या हो रहा है उसका।
तरबूज की तासीर ठंडी होती है, तरबूज खरबूजा देंगे उसको इमीडिएटली सांस नहीं आ रहा से बोलेंगे वो। तो डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू अब्यूज डाइट, अब गिलोय के केस कितने आए जो स्वामी जी ने बोला है गिलोय लो और लिवर डैमेज हो गया। मैं आपको वो भेज सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, वो प्रूविंग होगी उस दवाई की, काढ़ा ले लेके और बीमारी पैदा कर ली हमने, मिस यूज प्रमोट कर रहे हैं दवाइयों को फजूल के अंदर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो वी आर प्रोड्यूसिंग, proving on the patients. In 95% of our practice, I have come across medicine aggravation and not homeopathy aggravation. This is my experience. So इसलिए मैं पेशेंट को बोलता I am going to give you very slow. वो पहले आके कहते डॉक्टर साहब सुना होम्योपैथी में बीमारी बढ़ जाती है। I said please, I am going very slow. I am going very slow. इसलिए स्लो हो सकता है आपको रिलीफ नहीं मिले 2 weeks or 4 weeks में, but let me see your sensitivity. After 4 to 6 weeks, you are bound to say I am better. And honestly, in skin and respiratory, मेरी main practice वही है. Our success rate is more than 90%. Within 2 months, inhalers सबके कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं. And I can see it through this video. A lot of my doctors are sitting on the Baxter Homeopathy Medical College. You talk to them. They are treating and they are getting fantastic results. Dr. Anamika, I can see she's sitting there. आप उससे संपर्क करके बात करिए हमारे कॉलेज में. She says मेरा तो more than 90% ठीक चल रही है केसेस. आपको उसे समझना है कि कब एग्रीवेशन है, कब आपने प्लेसिबो देना है. ये नहीं कि किसी को खांसी जुकाम हो तो स्किन है तो स्किन की दवाई देनी शुरू कर दो. अब पूरा सिविल में मिलता नहीं, आप तो क्या मार रहे होते हो. किसी को सल्फर दे दो, किसी को ग्राफाइट दे दो, किसी को नेट्रोम्यूट दे दो. एंड वी आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक्स एंड वी से वी शुड नॉट गिव स्पेसिफिक्स. मैं सबसे बात पूछता हूँ, वार्ड्स में चेंज हो गए, वार्ड्स में मैं सबसे पूछता हूँ क्या दवाई आप सोचते, सारे कहते हैं थूजाई, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिन. इज दिस होम्योपैथी? No, you should never ask. You should never ask. ढूंढो दवाई इसकी, लेकिन सारे ढूंढते हैं. ये वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, सेबोसाइलेट्रल दे दो, ये दे दो, डायबिटीज साइजिम दे दो, ये दे दो, रोल्फे दे दो. सबसे 3 ज्यादा दवाइयां बिकने वाली कौन सी होम्योपैथी में? रोल्फिया, बर्बसवॉल, साइजिम. रोल्फिया हाई ब्लड प्रेशर. अब आई एम प्लीज कम एंड विजिट वैक्सीन रुड़की प्लांट. यू फाइंड 500 किलो के हमने वो मैसेज टैंक्स में ये परमानेंट दवाई डाली हुई, साइजिम, बर्बसवॉल एंड रोल्फिया, because the highest selling drugs and they all doctors are using it as specifics. So we are looking for specifics, but nahi, hum bolenge I'm a classical homeopath. What is classical homeopath? Right indicated medicine is the right tonic for you. Right indicated medicine is like a right dot पे जाके एरो लगता है. तो मुझे पेशेंट बोलते हैं आप टॉनिक नहीं लिख के देते. ऐसे भाई, right indicated medicine is the right tonic for me. बाकी टॉनिक्स क्या हैं? सिर्फ चीनी, रंग, प्रेजर्वेटिव्स, कलर और उसके बाद few drops of and few drops of mother nature's of dilution. You said these are tonics. Now see, I show you. अब देखिए हीपासल्फ हनीमैन ने बनाया, ऑस्ट्रोसेल्फ ये पेज दिया है, HPI वॉल्यूम 1 पेज 132 used by Hahnemann in 1794. A pharmacopoeia खोल लो. He has made this combination of 2 medicines. And now see this, Causticum. Volume 1, page 97. Freshly burnt lime. अभी कैसे दिया मेरे को नहीं समझ आया, किसी को समझ नहीं आएगा. और सरप्राइजिंगली मक्सॉल देखिए आप, 3 दवाइयां दी उन्होंने. मर्क्यूरी 85 ग्राम्स, नाइट्रिक एसिड 48 ml. उधर देखो
स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अभी तीनों मिक्स करके उन्होंने मक्सल बना दी। अब इसका क्या लॉजिक है, मेरे को समझा सकते हैं आप? और ये ऑफिशियल ड्रग है। क्या आप मक्सल, हीपरसल, कॉस्टिकम को रोज नहीं देते हैं? Is it not a combination made by Honeyman? Now, see, other man-made combinations and natural combinations. और लास्ट 50 साल में बताओ फार्माकोपिया किसी होम्योपैथ का ऐड हुआ है? नहीं। उसके प्रोटोकॉल देखते ज्यादा एडमिनिस्ट्रेट करेगी नहीं। और सीसीआरएस ने कितनी नई दवाइयां बना कर दी लास्ट 50 साल में। कमाल है हनीमैन साहब के उनके फॉलोअर्स है, उन्होंने कितना बड़ा फार्माकोपिया तैयार कर दिया जो हम 200 साल में कुछ नहीं कर सके। उसके बाद ये देखिए ऑरोम्यून नाइट्रिकम, ये भी रेफरेंस एचपीआई का गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है। सोडियम क्लोराइड एंड दिस कॉम्बिनेशन एलन में है। ये देखिए नेक्स्ट गन पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन, चारकोल सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड सी ऑल दिस सल्फर आयोडाइड। कितने नाम है। अब देखिए नेचुरल कॉम्बिनेशंस। हेक्ला लावा, हेक्ला लावा हैज सिलिशिया, एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, 5 ऐसे ऑफिशियल फार्माकोपिया में है। ये देखिए आप कितनी दवाइयां में इसमें। ए नेचुरल मिनरल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम मेडिसिन स्प्रिंग, और अब तो मिलता भी नहीं, ये पता नहीं कैसे बन रही दवाइयां। आई एम मैन्युफैक्चरर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस। जितने नजोर्स आप यूज कर रहे हैं और आप भरोसे चल रहे हो, किस मैन्युफैक्चरर ने नजोर्स बनाए हैं उसे क्वेश्चन करो। वो पुरानी पोटेंसी लेकर उसे रेस करके बनाए जा रहे हैं सब लोग। कितनों ने सीपिया का इंक यूज करी है बनाने के लिए दवाई, फिश से बनती है जो। And see this other medicines prepared from natural springs. That is why I am now coming to the conclusion that first, allergy is apparently exogenic, is primarily endogenic, माँ बाप से आती है और शिफ्ट करती है। मैंने आपको 5 डिफरेंस ओपिनियन बता दिए और उसकी वो बता दी मैंने आपको कि फैमिली हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस इज a concise lecture, and based on this I've been practicing, and Baxen has made new drugs, a phenomenal success we have got, phenomenal, fastest growing company in the country today. So those people who are interested to talk about application of medicines, जो मैं अपने क्लिनिक्स में क्या देता हूं, if you are interested in the next lecture, please leave a note. I will definitely speak on what I give. स्किन में मैं क्या देता हूं, रेस्पिरेटरी में मैं क्या देता हूं, और फिर उसके बाद केसेस दिखाऊंगा मैं आपको कि इस दवाई को ये दिया तो ये हुआ, इसके बाद मैंने कैसे फॉलो अप किया। That is another chapter for 1 hour or 2 hours. And with this word, this is what I always say. Homeopathy has given us daily bread, a definite status, a dignity, an honorable identity, a human idealism in medicine to live and work with, and a great purpose in life to serve our fellow beings. Any hesitation, delay, and disinclination to promote homeopathy, any refusal to serve his cause, to sacrifice for his progress, and to stand for his right, every act of diversion or distortion is a treachery, betrayal, and a sin. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हम रोटी खा रहे हैं होम्योपैथी की, उससे बेईमानी मत करो। इसलिए आई एम वेरी प्राउड टू से यू प्लीज दोस हु गेट द चांस कम एंड सी Baxen होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। वो जो गुरु नानक की 2 रोटी है ना, दूध वाली और खून वाली, हमने 1 पैसा भी किसी से वहां डोनेशन नहीं लिया है।
एक पैसे से किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं करा है। वो होम्योपैथिक पैसे की हर ईंट उस पैसे की बनी है, इसलिए मैं उसको अपना मक्का मानता हूँ, गुरुद्वारा मानता हूँ, मंदिर मानता हूँ, मस्जिद मानता हूँ, और मैंने कोई पूजा नहीं कराई, मैंने मत्था टेका है। और माय लॉर्ड, आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ गॉड। या मैंने कॉल बनाया, गिविंग बैक टू द नेशन। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस, हम थोड़े देर क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, any questions if you have, or you can prepare it next time. What is the experience? कर दिए। किसी और को Everybody say thank you. Thanks a lot. Thanks a lot to the learned speaker, our master of the present time, Honorable Dr. Bakshi sir, for giving आवाज such a नहीं आ nice. रही है आपकी। Thanks a lot to all the participants, and special thanks to our Honorable Dr. Bakshi sir, who presented a very nice and knowledgeable lecture to all of us. Each and everything had been delivered by him by heart. आज की इस सभा में हमारे मध्य उपस्थित हमारे गुरु, हमारे संरक्षक, जिन्होंने होम्योपैथी को बहुत ही बड़ा विस्तार दिया है, उन्होंने अपने अनुभव के साथ और अपने ज्ञान के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से लाभान्वित किया। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बहुत ही सरल हृदय से कही कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि हम जड़ से आपका रोग मिटा देंगे, ये बहुत गलत बात वो कहते हैं। हम उनके अनुसार और अपने अनुभव के आधार पर हमें कहना चाहिए कि हम आपकी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करेंगे, किसी को झूठा आश्वासन नहीं दें। बहुत अच्छी बात आपने कही, जिसके लिए हम आपके प्रति हृदय से नतमस्तक हैं। मैं आपको बताऊं, और आप तो सबसे परिचित होंगे कि आज ये सभा हमारे लिए भी जो उपस्थिति रही वो अप्रत्याशित उपस्थिति रही। विश्व के कोने कोने के डॉक्टर्स ने आपकी इस सभा को सुना और लाभान्वित हुए। अब एक प्रश्न उत्तर क्वेश्चन सेशन है जो आदरणीय डॉक्टर एसपी बख्शी साहब ने स्वयं ऑफर किया है। आप में से जो भी प्रश्न पूछना चाहें, अभी बहुत सारी क्वेरीज थी जो बीच में चैट बॉक्स पर आ रही थी, आप वो प्रश्न पूछें। आप होस्ट से निवेदन करें, हैंड रेज करें तो आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप अपना क्वेश्चन सीधा सर से पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम सर नाउ। Few of the present participants were giving some queries, were asking to know the answers of their problems. Please raise your hand and ask it. Hello. Hi, Sanjeev. Hello, Dr. Bakshi. I have one question for you, please. Yeah. And my question is, what is your experience of homeopathic adoption in other countries? And is it similar to India? If it's similar, what are the similarities? And if it's different, what are the differences? What is this question? Adoption in other countries? Sanjeevan, homeopathy, you'll be surprised, came from Germany. It was invented by Dr. Hahnemann, who was an allopath, and it went to Europe. It went to USA, worldwide.
But because of invention of antibiotics, so-called steroids brought magic cure. Homeopathy became the second choice of people. Why? It's a very good question. I would like to answer this question. You see, most of our patients, they think that we can treat surgery also. We are physicians, we are not surgeons. So we should not mix up surgery with homeopathy. That is why you see, I've been in charge of education of all homeopathic colleges for 18 years, being president of the council. And our all hospitals failed miserably in treating acute emergency. Suppose anybody comes with a pain in the chest. We homeopaths are not ready to read ECG also. Our quality of education, even now, in many colleges, is very, very poor. Now we are getting good students from the second and third generations. Like my father was a homeopath, I am a homeopath, my daughter is a homeopath, my daughters are homeopath. So their caliber is different. But they can go for research. That is why in Baxon Homeopathic Medical and College, we are spending about 10 to 15 crores to make it a holistic hospital. We are making 120 bed hospital with operation theaters, ICU, everything. We CT scan. So that any patient who comes can be treated with emergency. At the same time, after he comes out, he can treat it with homeopathy. So there will be homeopathy wing, naturopathy wing, and acute emergency also. So I'm making a holistic multi-specialty hospital. Otherwise, not a single homeopathic college, I can say with confidence, hospital can treat acute emergency. So I always say, please work in your area. If you have stone in the kidneys, a big stone, it's a surgical remover. You can't remove it with homeopathic medicine. You have to go for lithotripsy or surgery. So that is the reason homeopathy was faded in Germany itself. I'm shocked to see when I was there 4 years back in 17-18 Liga conference, I went to leading manufacturers of homeopathic medicines. People have very few idea what is homeopathy in Germany itself, because they couldn't cope up with the acute emergency. So according to me, we must have a wing of homeopathy, a penta system. I call it allopathy, homeopathy, Ayurveda. You bring everything, bring the best and treat the patient. And that is the reason it failed miserably all over the world. But now India is the leader, the world leader. And many new beautiful colleges have come up now. I hope our hospital becomes a model for them to follow. That is why homeopathy has not done well, even in UK also. And in Germany, it's bad. It's doing well in Mexico. France is doing very well. But that is not a complete. They are only physicians, not surgeons. That is my answer. Okay? I hope I'm clear. Yeah, Shyam? Mr. Shyam? Thank you, sir. Thank you, sir, for such a wonderful and nice reply. Dr. And- Lokmani, Dr. Yeah. Lokmani, very sorry to interrupt you. There is another question. Could we read it from the chat box? Is it all right? Okay, ma'am. Yeah. So Dr. Deepthi asks, Dr. Bakshi, what role do the combination medicines play in the treatment of allergies? With combination medicines, I mean the patent combinations which different homeopathy brands are creating for different conditions.
So what role do the combination medicines play at the moment for allergies? Dr. Bakshi, over to you. That's a good question. Very good question. You see, again, I'm coming back to the same thing what I said. A combination of 2 medicine or 3 medicine or 4 medicine no longer brings a combination. Don't use the word combination. It's a new medicine. Provided it's approved and reproved by the approver, it works. And all combination medicine must be clinically tried on not 100 but thousands of patients before bringing it out in the market. But unfortunately, all manufacturers are just mixing a few medicines and selling those medicines. As I always say, in the name of God, we do bigger sins. Even there is no God, let us create one. Nahi bhi hai, patent bana ke de do, bhej do, which is not good. I can take a session on the new medicines what we have invented and how to treat the cases and the difficulties we found, and the testimonials also. They will come live on TV to talk. Okay. Thank you. Also, one last question. There's one more in the chat box. What is the scope of nano formulation in homeopathic medicines? Ms. Maha Lakshmi asks, the concept of nano formulation in homeopathy. You see, this is an initial stage. It has to be again proved. A homeopathy is nanoparticles. When you potentize, through ultra microscope, they have found metals in the microscopes. Dr. Ballari has proved particles. Homeopathy में आज तक we were not able to prove कि कौन सी दवाई इसके अंदर पड़ी है. But the metals they have been able to detect even in 1000 potency also. And slowly the mapping science is coming. A pattern of the medicine we've seen in the mapping, and you'll say this is Mugsol. वो रिसर्च चल रही है उसके ऊपर. Thank you. There is just one more query. Could we also have the link for the lecture after this? I request the coordinator to mail the link to all the participants afterwards. Thank you. We'll do that. Thank you. Lokmani ji? Yes, sir. हो गया खत्म. Thank you. Thank you, sir. So nice of you, sir. आप सब लोगों को धन्यवाद. आपने बड़ी पेशेंस दिखाई और काफी बात सुनी. पर एक सेशन करेंगे, हम दवाइयों के बारे में बात करेंगे. जो लोग सुनना चाहते हैं वो क्या करते हैं. मैंने कोई भी सेमिनार छोड़ा नहीं हुआ. वो कॉपी पेंसिल लिखते रहते हैं कि कौन सी दवाई किसने दी. वो भी करेंगे. हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा सर. नहीं करेंगे तो अगली बारी करेंगे. जो सुनना चाहता है वो अपने लिंक बता दे और हम उस पर करेंगे लेक्चर. जरूर करेंगे. ओके. थैंक यू. आप 2 मिनट में और चाहूंगा सर. आप सभी ने ये विशेष सेमिनार सुनी और जो आशीर्वचन और जो विश्वास आदरणीय श्री बख्शी सर ने दिए हैं वो निश्चित रूप से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में और हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे. मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर जेडी दरियानी साहब जयपुर से, उन्होंने भी आपको अपने अभिवादन प्रेषित किए हैं. मेरे पास उनका फोन आया. अस्वस्थता की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके. फोन आया था उनका. फोन आया था. वो कोरोना के कवरी कर रहे हो. जी सर. जी सर. और डॉक्टर केसी बिंडा सर का भी हमारे पास में मैसेज आया. दोनों को ही दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह हैं दोनों. मेरे गुरु हैं सर, मेरे परिजन हैं आपके आशीर्वाद से. मेरे 35-40 साल के दोस्त हैं. बहुत क्लोज फ्रेंड हैं. सर सो नाइस ऑफ यू. आपका बहुत बहुत आशीर्वाद. और अब मैं एक धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर डी.के. शर्मा जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आपका और उपस्थित सभी जनों का धन्यवाद पारित करें. और मैं आपकी सारी टीम को, जिसे आपने पिछले 15 दिन से विशेष तौर से लगा रखा है, मैं अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर डी.के. शर्मा जी. जी. शर्मा जी हमारे पुराने मित्र हैं. जी.
DK Sharma. Please unmute. भाई सब डॉक्टर DK शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट. मैम प्लीज अनम्यूट डॉक्टर DK शर्मा जी. DK Sharma जी है. आ नहीं रहे. आप आ जाओ, उनको यहाँ बुला लो. उनको देखा तो था मैंने. जी जी सर, ही वाज देयर. फोन करता हूँ अभी तो ऑफिस ही बात हो रही है. फोन कर फटाफट. फोटो में लगाओ फोन उनको. डॉक्टर साहब मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको. हाँ, हेलो जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन डॉक्टर साहब. माई सेल्फ डॉक्टर SD धनेटवाल फ्रॉम जयपुर, हाँ जी, मैं देख के पंकज भी आ गए हैं. फ्रेंड ऑफ डॉक्टर पंकज शर्मा. मैं समझ गया जी, समझ. मैं मिला हूँ आपको. यस यस. एंड लोकमणि इज माय क्लासमेट. ओह, अच्छा 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 अच्छा. डॉक्टर लोकमणि इज माय क्लासमेट. वेलकम डॉक्टर पंकज शर्मा, प्लीज एंड हैप्पी टू सी डॉक्टर SD हियर. धनेटवाल. या धनेटवाल जी, सो नाइस ऑफ यू. तो सीनियर होगी लोगों बनी से तो हेलो. ये डिग्री वाले. हेलो. हेलो. तो अनम्यूट वो वही करेंगे ना, तब जाके तुम. अच्छा, वो उन्होंने अनम्यूट किया. हेलो. 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 मेरे को 1 मिनट के लिए टाइम मिलेगा. अब यू कैन स्पीक. Yes. Hello, Dr. Lokmani Gupta sir, Dr. Bakshi sir. Thank you very much. Was nice and great session, sir. बहुत अच्छा लगा. We want very soon next session कि आप एस्थमा एंड स्किन एलर्जी में कौन सी दवा अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, इस संबंध में हमें जानकारी दीजिएगा. डॉक्टर राधा माहेश्वरी फ्रॉम जयपुर सर, आपसे मेरी उसमें दिल्ली में मुलाकात हुई थी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इंटरनेशनल सेमिनार में सर मैं मिली थी आपसे. और डॉक्टर दरियानी और डॉक्टर भिंडा की स्टूडेंट हूँ मैं सर. फर्स्ट बैच BHMS होल्डर हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जयपुर तुम्हारा सेकंड हाउस है. सर थैंक यू सो मच सर. हेलो डॉक्टर साहब. हेलो. हाँ जी, बोलो जी. डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, सिजोफ्रेनिया के ऊपर कुछ लेक्चर होना चाहिए. बाबा, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. मैं लेता ही नहीं केस. भाई ठीक नहीं होता है. इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस स्किन रेस्पिरेटरी स्टमक जॉइंट पे रखी है. और इसी में इतना पेशेंट है, जितना मर्जी देख लो. लेकिन इसको अवॉइड क्यों किया आपने डॉक्टर साहब? मेरे को ना एक तो एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी मेरे फादर की वजह से मुझे मिली, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया कि एलर्जीज के अंदर. और इतना सिर खपाने के बाद पेशेंट ठीक होता नहीं है. इट्स बेटर, मैंने कहा जो ठीक होता है उस पर परफेक्शन पे आ जाओ. आज ये पोजीशन है कि 20 लाख पेशेंट निकल गए मेरा 48 इयर्स प्रैक्टिस के अंदर एलर्जीज का. आप कम से कम 100 पेशेंट भी लगाओगे तो 48 इयर्स में सोच लो कि आप कितने हो जाते हैं. और मेरे क्लिनिक्स के, मेरे फादर के देखो कितना होगा. और बताइए आज सोराइसिस का क्योर का है, एक्जिमा का है, और वी गारंटी एक्जिमा कैसे नहीं ठीक होगा. जो अपना एरिया उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी शांति है. तो इतनी सिजोफ्रेनिया क्योर नहीं होती? मैंने तो आज तक देखा नहीं जी. है जी. मैंने तो 99% सोना नहीं ठीक होते हैं. और जेनेटिक मिलेगा. मैं ओपनली बोल रहा हूँ जी, जेनेटिक होता है, ये ठीक नहीं होता है. और ठीक होता है टेम्पररी ठीक होता है. मैं जी नहीं होएगा. बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल. पेशेंट पागल रहते हैं पेशेंट 2-2 घंटे बैठ के. और मैं बड़ा रेस्टलेस डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है. हेलो. मेरे पास इतना फ्लो अपना देखो. मैं एक डॉक्टर दिन में कितने पेशेंट अच्छी तरीके से देख सकता है? 100-150 से ऊपर देखेगा तो वो अपनी सेहत खराब करेगा. सही. ओके, राइट. टाइम था मैं 3 पेशेंट एट ए टाइम बुलाता था अपने क्लिनिक में. 3 डॉक्टर बैठे हुए, 2 इधर बैठते तो घंटी मारता, चलो जी बाहर चलो जी. तो बात थोड़ी बनी, घास काट रहा था मैं. एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, मेरे घर में ही एक सिजोफ्रेनिया का केस है. समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ. मैं अपने जो इंटरेस्ट शो किया, मैं समझ गया था.
सर तो आप सब जगह घूम के आ जाओ, पता कर लो, वो बोलेंगे नहीं ठीक होएगा। वो बोलता है ठीक है, तो झूठ बोलता है, उसको बोल 2-4 केस ठीक करे, मुझे दिखा दे। मैं बहुत सच्ची प्रैक्टिस करता हूँ सर, मैं बहुत एथिकल डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, आप देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड, पता देख लीजिए, सीसीएच में रहा हूँ, करोड़ों रुपए लोगों ने कमाया, मैंने एक पैसे ने किसी को खाने दिया, न खाया। ओके। किसी कॉलेज को बोलता कि मैंने बख्शी को पैसा दिया, डॉक्टर बख्शी को, और 50-50 लाख मिलता था कॉलेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं, ये पाप की कमाई नहीं आएगी। अगर यही करना था तो कॉलेज में डोनेशन नहीं ले सकते हम लोग। नहीं, पर डॉक्टर साहब जो सिजोफ्रेनिया के केसेस में जो कुछ मेडिसिन दी, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट तो महसूस किया? हाँ हाँ, वो होएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्यों नहीं होगा, क्योर नहीं होगा? इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बस एलोपैथी का सपोर्ट लेना पड़ता है डॉक्टर साहब? लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। और एक बात बोलो, मैं कान खींच के बोलो, बुरा नहीं मानना, उस बच्चे की शादी मत करना, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो 2 महीने बच्चों के डाइवोर्स होते थे, दोनों बहन भाई के सिजोफ्रेनिया की शादी कर दी, डाइवोर्स हो गए दोनों के। राइट राइट, वेरी एग्जैक्टली राइट। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म का भाग्य बनता है, या कोई हमने ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से मैं भी सफर कर रहा हूँ और वो भी दूसरा आदमी सफर कर रहा है। हम सबका भाग्य चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अब सबका भाग्य चेंज करने लग जाओ तो भगवान भी पागल हो जाएगा फिर तो। फिर भगवान को मानेंगे कौन? नहीं, कोई भगवान को देखो, भगवान तो सबको, सूरज सबको लाइट दे रहा है। जो मैंने आपको लाइन बोली, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म का भाग्य बनता है। 12 घर 9 ग्रह जन्म पत्री में, वो पूरी आपकी लाइफ बता देते हैं, तुम्हारी लाइफ कैसी जानी है। अब ऐसे बच्चे हैं जो ब्लाइंड है और जिसको जुवेनाइल डायबिटीज से कैसे ठीक करोगे? मुझे केस दिखाओ जुवेनाइल डायबिटीज का ठीक होता हो। नहीं होता सर, नहीं होता है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने और ये स्पष्टवादिता और सहृदयता मैं समझता हूं उपस्थित सभी चिकित्सकों के दिल में गहराई से उतरी होगी। हमें अपनी प्रैक्टिस में इस चीज को जरूर सीखना चाहिए और लागू करना चाहिए। साथियों, भाषा का अनुवाद हो सकता है, भाषा का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भाग्य का अनुवाद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। थैंक यू। जो भाग्य लेकर आदमी पैदा हुआ है, शिशु पैदा हुआ है, उसके न जाने कितने पुराने कर्मों का फल है, आज के कर्म का ही नहीं। क्योंकि हमारे मध्य से डॉक्टर DK शर्मा जी किसी आवश्यक कार्य से, भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी बाहर गए थे और वो रीज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्थान पर फोन पे उनसे बात हुई। मैं ही आपका धन्यवाद प्रस्ताव करता हूं। My dear friends and respected sir, with all the due regards, it had been our extreme pleasure to listen the one of established worldwide authorities of homeopathic system of medicine, Honorable respected Dr. SP Bakshi sir. We are extremely thankful to spare his valuable time for us and a nice presentation, elaboration of knowledge with various demonstrations of severe allergic cases, especially how the allergy comes, how the heredity affects the allergies. All the 4 varieties of the important systems are very well captured by this tendency of the heredity, and how and up to what extent we can treat with homeopathic diseases. Thanks and regards to all who had attended the webinar and made the program success. Now, before closing the meeting, we request all those present with us to please stand up and pay our Shraddhanjalis to respected Shri MP.S. Bakshi Sahab, MD Baxan, the elder brother of Dr. SP Bakshi Sahab, who recently lost here and who had been recently gone to heaven. May Almighty Goddess give peace to the departed soul and strength enough to all family members to bear up the
irreparable losses in the family. Our deepest regards to Bhai Sahab, and we all should pray our regards. Please get up, stand up, or join your hands to pray Shraddhanjali. 1 minute silence in honor of the departed soul, and we pray Almighty Goddess to give peace and strength enough for the departed soul. Thank you. Thank you, sir. Hari Om. Especially